students, welcome to my YouTube channel Creative English Studies. Today we will see activity sheet of the lesson The Cop and the Anthem written by O. Henry. Read the following extract and attempt the activities. 12 marks. इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा, जो कि आपके प्रोज सेक्शन में जो लेसन्स है उन पे बेस्ड होगा. Activities are Activity 1 Factual Global Understanding, 2nd Complex Inference Interpretation, 3rd Guess Analysis Conclusion, 4 Personal Response, 5 Language Study means grammar based on scene extract which is given, and Activity 6 Vocabulary, Synonyms, Antonyms and Meaning. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको प्रोज सेक्शन में से पूछा जाएगा. किसी भी लेसन में से आपको कोई एक्सट्रैक्ट देंगे और आपको उनकी एक्टिविटीज़ दी जाएगी. ये पूरा क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी 1. Discuss with your partner and find out the different ways in which Sophie tried to get arrested. The first one is given. आपको इस क्वेश्चन में सोफी ने जो अरेस्ट होने के लिए अटेम्प्ट किए वो अटेम्प्ट्स आपको इस आंसर में लिखने हैं. फर्स्ट, tried to enter a luxurious cafe. B. Sophie took a stone and threw it through the glass window of the shop. Third attempt, Sophie ate a meal in a simple restaurant and declared that he had no money to pay the bill. D. Sophie yelled like a drunken person and made noise in public places. इन सारे अटेम्प्ट करने के बाद भी सोफी अरेस्ट नहीं हो पाया. Second, describe the atmosphere when Sophie reached near the church. चर्च के पास आने के बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था वो हमें बताना है. A is already given there. A soft light glowed through the violet stained window. Second, it was a quiet corner with an old church. The place was very peaceful. C. The moon was above, full and radiant with created brightness. D. Sparrows twittered sleepily in the eaves in the country churchyard. So this is the answer of this question. Activity 2. Read the story and match the incidents given in column A with the consequences given in column B. ये क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको आंसर बताए हुए हैं. कॉलम ए, सोफी ट्राइड टू एंटर अ कैफ़े. सोफी ने जब कैफ़े में जाने का प्रयास किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसका परिणाम क्या हुआ. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स ऑफ द हेड वेटर टर्न हिम अराउंड. जब सोफी ने कैफ़े में जाने का प्रयास किया तो वेटर के स्ट्रॉन्ग और रेडी हैंड्स ने उसको सोफी को बाहर निकाल दिया. सेकेंड, सोफी ब्रोक अ ग्लास विंडो. द कॉप रैन आफ्टर अनदर मैन. ग्लास तो सोफी ने फोड़ा लेकिन जो कॉप थे, जो पुलिस थे, वो दूसरे इंसान के पीछे भाग गए. थर्ड, टू वेटर्स पिंच्ड सोफी ऑन द कैलस पेवमेंट. जब 2 वेटर ने उसको हार्ड स्ट्रीट पे ढकेल दिया तब सोफी ने क्या किया. He stood up slowly beating the dust from his clothes. 4. Sophie heard the anthem being played in the church. Suddenly a wonderful change came in his heart. 5th, cop arrests Sophie for hanging around. Answer is dream of turning around in life was shattered. 2. Give reasons and complete the following. We have to give reasons for the question. Sophie had confidence in himself because of his appearance. इसीलिए वो confident था कि वो अच्छा लग रहा है. B. The head waiter of the luxurious cafe did not allow Sophie to enter because
As Sophie tried to enter the restaurant, waiter's eye fell on his old shoes and torn clothes. उनके ओल्ड शूज़ पे और फटे हुए कपड़ों पे वेटर की नज़र गई और वेटर ने सोफी को कैफ़े में एंटर होने नहीं दिया. The cop did not arrest Sophie for breaking the glass window because ग्लास तोड़ने पर भी सोफी को कॉप ने क्यों अरेस्ट नहीं किया? क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉप men who smash window do not remain to chat with police, they run away. पुलिस का कहना था कि जो इंसान विंडो फोड़ेगा वो पुलिस का वेट करते हुए वहाँ पे नहीं रुकेगा, वो भाग जाएगा. इसीलिए सोफी वहाँ पे रुका रहा, इसीलिए कॉप ने उसे अरेस्ट नहीं किया. D. The cop did not arrest Sophie for shouting and dancing. उसको सोफी को शाउटिंग यानी चिल्लाने के लिए और वहाँ पे डांस करने के लिए कॉप ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज कॉप थॉट दैट सोफी इज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड दे आर हार्मलेस. कॉप हैज ऑर्डर्स टू लेट देम गो. पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच शोज दैट. आपको एक्सट्रैक्ट में से ऐसी लाइन ढूंढनी है जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है. सोफी वॉन्ट्स टू एंटर द कैफे फॉर 2 reasons. आंसर इज it catered to large appetites and modest pursuits. Second, now get busy and call a cop, Sophie said, and don't keep a gentleman waiting. B. Sophie was afraid that he won't be able to enter the prison. ये जो स्टेटमेंट दिया है ये दिखाने वाली लाइन कौन सी है एक्सट्रैक्ट में? आंसर इज सोफी वॉज सीज्ड विथ अ सडन फियर दैट सम ड्रेडफुल एन्चांटमेंट हैड रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट. C. Sophie was not caught by the cop for throwing stone at the glass. ये लाइन कौन सी एक्सट्रैक्ट में से कौन सी लाइन ये स्टेटमेंट दिखाती है? द पुलिस मैन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू. D. Sophie actually did not want the umbrella. Answer. He hurled the umbrella angrily into an excavation. E. Listening to the anthem, Sophie remembered his good old days. Answer is, and the anthem that organist played cemented Sophie to the iron fence, for he had known well in the days when his life contained such things as a mother and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and colors. Next activity. He would make a man of himself again. The word man in the sentence means he would make a man of himself again. वो फिर से एक इंसान बनना चाहता था. तो man ये वर्ड क्या दिखाता है? Answer. A working person living worthy and respectable life. एक ऐसा इंसान जो अच्छी ज़िंदगी जीता है, अपनी ज़िंदगी रिस्पेक्टफुली जीता है, ये मैन शो करता है. नेक्स्ट एक्टिविटी. सोफीज अर्लियर लाइफ वॉज मच डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेजेंट लाइफ. कंप्लीट द टेबल टू शो दिस कॉन्ट्रास्ट. हमें अर्लियर लाइफ और प्रेजेंट लाइफ हमें बतानी है यहाँ पे. Contained A. Contained friends and roses. Now in present life, unworthy desires. In his earlier life, love of family he will get. Then B. Dead hopes. C. Ambitions and good clothes. In present life, wrecked faculties. D. Pure and flawless thoughts. D. Valueless motives. Next activity. After listening to the sweet and solemn organ notes, Sophie decide to. वो स्वीट म्यूजिक सुनने के बाद सोफी ने क्या डिसाइड किया? A. Bring back his old eager ambitions and pursue them without losing hope and determination. B. Go into the noise downtown district and find
Activity 3. First. O. Henry has used the different words to indicate prison where Sophie wants to reach. Make a list of those words. इस एक्सट्रैक्ट में प्रिजन के लिए बहुत सारे दूसरे वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं, वो ढूंढ के हमें आंसर में लिखने हैं. आंसर इज फर्स्ट विंटर आयरलैंड, सेकंड कोवेटेड आयरलैंड, 3 लिम्बो, 4 अनअटेनेबल आर्केडिया, 5th आयरलैंड. ये सारे वर्ड्स प्रिजन के लिए यूज़ किए गए हैं. सेकंड, find out the words used for degraded state of Sophie. Answer is the pit into which he had tumbled, second unworthy desire, 3 dead hopes, 4 wicked faculties, 5 base motives that made up his existence. Activity 3. The specific meaning of the word anthem. हमें anthem इस word का specific meaning बताना है. In the content of the story is first. Answer is first, a religious instrumental song or a prayer played by the organist in a church for the celebration of coming Shabbat. Second, an influential musical note played by the organist to inspire an idle person to become a worthy person. Activity 4. First, convert the following sentences into negative without changing their meanings. Means we have to make this sentences negative but without changing their meaning. First is A. The policeman refused to accept Sophie even as a clue. Answer is the policeman did not accept Sophie even as a clue. B. Sophie drifted along twice unsuccessful. B. Sophie drifted along twice not successful. C. Sophie stopped his unavailing racket. Answer is Sophie stopped his racket which was not successful. D. The Ireland seemed very far away. Answer is the Ireland seemed not at all clear. E. The Ireland seemed an unattainable Arcadia. Answer is the Ireland seemed an Arcadia which was not attainable. Activity 4. Second, convert the following sentences into affirmative without changing their meaning. Means we have to change these sentences affirmative but without changing their meaning. A. Men who smash windows do not remain to chat with the police. Answer is man who smash windows refrain from remaining to chat with the police. B. Why don't you call a cop? B. Answer is please call a cop. C. On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. Answer is on the opposite side of the street was a very ordinary restaurant. D. Noisy but no harm. Answer noise but harmless. E. They seemed to regard him as a king who could do no wrong. Answer is they seemed to regard him as a king who always right. So these are the activities based on the lesson, the cop and the anthem. Thank you so much for watching this video. Stay home, stay safe and best luck.